Hello students, today's we are covering our topic counting and its objective. So first we covering counting. What is accounting? इसकी मेनली आपके एग्जाम्स में जो है डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, इसका मीनिंग पूछा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस. यानी हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के अंदर होने वाली, उनको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है और इंटरप्रेट करना है टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो उसको अकाउंटिंग डाटा को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. वो हो सकते हैं एम्प्लॉयज, हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स, हो सकते हैं और बहुत सारी पार्टीज होती हैं. इसको टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे. सो as according to American Institute of Certified Public Accountants AICPA के अकॉर्डिंग उसने एक डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग की. वो क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है. किस चीज की? क्या कला है इसमें, क्या आर्ट है? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना यानी अलग अलग उसको बांटना ट्रांजेक्शन्स को, एंड समराइज करना जिससे कि वो समझ में आए इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. और किस टर्म्स में उसको समराइज करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी में उसे समराइज करना है. तो अकॉर्डिंग टू द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. यानी अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है. किस चीज की? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी की टर्म्स में. Transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. कहने का मतलब इसमें हम ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की लेंगे, यानी वो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसमें फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगी, और फिर उनको इंटरप्रेट करना यूजर्स को. ये हमें काम किस में करना होता है? अकाउंटिंग में करना होता है, एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. नेक्स्ट है हमारा बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है? तो इन सिंपल वर्ड्स अकाउंटिंग मींस कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मनी रिलेटेड बिजनेस activities so that the financial position and performance of business can be known. So it is easy to understand accounting is nothing. Accounting is keeping a proper record of money related business transactions or business activities so that financial position and performance of business can be known at the year end. Okay, let's understand it with the help of these points. No profit or loss. First point is ki we are able to know the profit and loss of the business. Second is to understand financial position, in what position business is standing. Third is make business decision. In day-to-day life, business have to take many decisions which can be taken with the help of accounting records. Fourth one is provide information to owners. It provides information to owners that is it business is working properly or not. To managers, is it performance is good or bad. To investors, is business is performing well. And to government, is businesses filing its taxes and liabilities properly. Short meaning of accounting is a language of business. In simple words, accounting is the language of business, a language in which business speak, that provides financial information for decision making. Easy. It provides financial information for the purpose of decision making. So different definitions are given by different uh, organizations and people. First one is American Accounting Association, AAA. Accounting is the process. AAA, American Accounting Association, defines accounting as a process. A process of what? Identifying, measuring, communicating,
economic information to permit informed judgments and decisions by users of information. So it is also defining accounting as a process of identifying, measuring, communicating economic information so that the users of the users of accounting can make a judgment properly. Next definition is given by AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. They defined accounting as counting is the art of recording, classifying. They defined accounting as art. Art of what? Art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are in parts at least of financial nature. This definition we already read above. Okay, let's move further. The third definition is given by R.N. Antony. Counting means collecting, summarizing, analyzing, and reporting financial information about the business. Simple definition. That accounting means collecting, summarizing, analyzing, and reporting financial information about the business. Fourth definition given by L.C. Cooper. L.C. Cooper defines accounting is the science. Accounting is science. Science of what? Science of recording, classifying business transaction and event. Primarily of financial character. Primary of financial character and the art of making significant summaries, analysis, and interpretation of those transactions. Smith and Ashbrain also defines accounting. Accounting is a means of measuring, communicating financial information. Kohler also defines accounting. Accounting is a process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of the information. Spicer and Pegler also defines accounting. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing transactions and events of financial character and interpreting the results thereof. Okay, these are the different definitions given by different authors and organization about accounting. So now we continue with the objectives of accounting. The next topic is our objectives of accounting. So, what is the objective? Why accounting is performed in the organization? First of all, it is performed for recording the transaction. The first objective, the first purpose of doing accounting is recording of transactions to keep a systematic and permanent record of all financial transactions. Accounting is to be done in the organization. Second point is ascertainment of profit and loss, yani knowing the profit and losses of the business to determine the net profit or loss of business for a particular period. It means in a particular period or in a 1 year or in a financial year, what profit or what loss business occur by doing the business transactions. Third one is knowing of financial position. We are able to know the financial position of business. Is business is in a favorable financial position or is a unfavorable financial position? To know the financial position of business through the balance sheet, we can know it with the help of balance sheet, because in balance sheet we have two columns. One is assets and one is liabilities. Asset and one is liabilities. Okay, go next. Providing information to users. Simple. Accounting is performed to provide informations to the users, to provide financial information to use owners, management, investors, creditors, and government. It provides information to the managers, to the management, to the investors, to the creditors, and to the government. This point is facilitating decision making. It helps in taking good decisions by the management and the different investors. Helps management in planning, controlling, and decision making. Simple. Sixth point is prevention and detection of error and fraud. It helps in prevention and detection of errors and frauds. ये मदद करता है रिड्यूस करने में
एरर्स एंड फ्रॉड्स को और उनको फाइंड करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज दे आर इन प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड helps in minimizing errors and frauds. Legal compliance, uh, because in small businesses we don't have to present our financial information to people, but in big businesses like companies and business organization, they have to fulfill the tax requirements, the legal formalities. So for that purpose they are legally uh, bound to make accounting records. So that is legal compliance, to meet statutory and legal requirement of business. Companies maintain accounting records. Eighth one is evaluation of business performance, the performance of business, the growth of business, the profit of the business. To evaluate and analyze the growth of business, we do accounting to compare past present performance and analyze growth. So these are the objectives of accounting. So वन वंस अगेन रिवाइज करते हैं इन्हें दोबारा. तो अकाउंटिंग का पहला काम है भैया, फर्स्ट वर्क इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग. सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने में हेल्प करता है. थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने में बिजनेस की हेल्प करता है. फोर्थ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है टू द यूजर्स. फिफ्थ, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए काम करते हैं जिससे हम डिसीजन सही से ले पाए. सिक्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट और फाइंड करने में हेल्प करता है. सेवन, लीगल कंप्लाइंस को पूरा करने में हेल्प करता है. बहुत सारी कंपनीज बिजनेसेस को लीगल कंप्लाइंस होता है कि उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा. और एट, बिजनेस परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में हेल्प करता है ईयर ऑन ईयर, कि एक साल में आपकी क्या ग्रोथ रही थी और दूसरे साल में आपने कितनी सेल्स करी. इससे पता लगेगा कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे. दैट इज बिजनेस परफॉर्मेंस. सो दैट्स ऑल टुडे. We discussed two topics, accounting and objectives of accounting. So comment if any query is about that topic or anything. Thank you.